Hello students, how are you all? So yes, I am hoping that you all are safe and fine at home and doing well. Yes, as your test, by your test I got to know that you are doing well. You are watching all the videos and you are reading the books thoroughly and then you are doing the test. So yes, these things I came to know by seeing your test. But yes, those who are not regular or for watching the videos and for studying, so yes, do be regular and do your studies on time. So yes, now our chapter 11 is going on, that is moon and artificial satellite. In this chapter we already discussed about the introduction of the moon. Yes, what is moon, where it revolves, what is the surface of the moon, like how the surface of the moon appears, and by which instrument we can see the moon from the earth itself, life is possible or not on the moon, and what is the gravity on the moon. So all these topics we covered in our previous video. So those who didn't watch the previous video, do watch it. Now today's topic is phases of the moon. Okay, so yes, you may amazed that ki moon is changing its shape every day, every night. So yes, how it is possible? कोई भी चीज जो कोई भी टच नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे इन्फ्लुएंस से, लेकिन वो अपना शेप चेंज कर रहा है आसमान में. हाउ इट इज पॉसिबल? स्टार्स आर नॉट चेंजिंग देयर शेप, अर्थ इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप, सन इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप, तो व्हाई द मून इज चेंजिंग इट्स शेप्स? So yes, this is about the topic which we are going to do in our today's class. Yes, sun appears to change its shape every night. So what does the phases of moon means? The day-to-day changes in the shape of the moon as seen from the earth. So yes, when we are seeing it from the earth, we can easily observe that every day the moon is changing its shape. So this is known as the phases of the moon. So why it is happening? It is happening because of the revolution of the moon around the earth. So yes, this is earth and this is moon and this is sun. So yes, we can draw sun here also. So yes, when it moves around the earth in a circular path, and because of the sun rays we observe many of the changes. So how this is happening, why this is happening, all these things we are going to study in today's class. Before that, you must watch one video which I am going to share with you. Afterwards we are going to study it further. So yes, watch this video. The moon is our nearest neighbor in space. It is much closer to us than the sun. It is only 239,000 miles away. The sun is 93 million miles away. The moon is much smaller than the earth. The moon is not like the sun or other stars. It does not give off its own light. It only reflects the light of the sun. That means the sun's light bounces off it. A planet orbits a sun. A moon orbits a planet. The moon takes 28 days to go completely around the earth. The moon is not smooth on its surface. It has craters, big holes. It has no air. It does not have water. So there is no life on the moon. But people have visited the moon. Neil Armstrong, an American astronaut, was the first person to step on the moon. Moon phases. The moon looks different at different times. Does it change its shape? No, the moon stays the same. What changes is how we see it from Earth. But we don't always see all of that side. Sometimes we only see part of it. This is because of the way it moves around the Earth. Remember that the moon only reflects the light of the sun. So, when the sun is behind the moon, we can't see it at all. We call this a new moon.
the night is very dark. When the sun is facing the moon, we see the whole face of the moon lit up. This is called a full moon. What happens between the new moon and the full moon? We see only parts of the moon. First, we see just a little slice. Only a little of the sun's light is hitting the moon. It seems to get bigger each night. Then we can see half of the moon lit up. Each night we see more and more of it. Then finally we see the full moon. After that, it seems to get smaller again. We see less and less of it. Then we cannot see it at all. From Earth, it looks like the sun is not lighting up the moon. This is called the new moon. Then the cycle starts all over again. These are called the phases of the moon. The next time you're outside at night, look at the moon. Watch how it changes from one night to the next. Yes, students, you have watched the video and I am damn sure that you got to know some of the things about that. But full explanation I am going to give you now. So yes, this is new moon. Okay, I will try to make you understand like this. Like the rays which are coming from this mobile, when it comes into my eyes, then I am able to see this mobile. ठीक है, जो भी रेज वहां से आ रही हैं वो मुझे डायरेक्ट मेरे पास पहुंच रही है तो मुझे मोबाइल दिख रहा है. लाइक यहाँ पर एक लाइट है, वहां से डायरेक्ट मेरे पास लाइट पहुंच पा रही है तो आई एम एबल टू सी द लाइट, आई एम एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग. तो मेरी आईज में वो आ रही है. ठीक है, अगर ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम कीपिंग इट इन बिटवीन द लाइट एंड माई फेस, देन स्टिल लाइट इज क्रॉसिंग दिस particular transparent sheet, then again I am able to see this also, I am able to light also, because this is a transparent sheet and light can cross from this sheet. ठीक है, now I am having this marker. ठीक है, so yes, when light is coming from the source, when touch it, तो yes, this is an hard object or we can say opaque object. ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता. ठीक है, इसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, यानी कि इससे रिफ्लेक्ट होकर कोई भी लाइट मेरी आंखों तक नहीं आ रही है. देन एम आई एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? नहीं, ये तो चलो लाइट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसके बीच में इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, देन आई एम अनएबल टू सी इट बिकॉज लाइट कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस ओपेक ऑब्जेक्ट. तो वो मेरी आंखों में तब आएगी, तभी तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगी. बट at this position the light is not entering into my eyes after reflecting from that surface, so this is not visible to my eyes. This stage is known as new moon stage. When the moon is in between me, you can consider as earth, this marker you can consider as moon, and this light is you can consider as sun. So when this marker comes between the light and me, then I am unable to see this marker. The same thing happening is here also. When the moon is come between the sun and the earth, then we are unable to see the moon. So that particular stage when we don't see any moon in the night sky, तो उस particular time को हम बोलते हैं new moon, अमावस्या की रात जो हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, तो यस, उस दिन हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो सन और अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होता है. ठीक है, तो अभी क्या है कि वो थोड़ा सा मूव करेगा, थोड़ा सा हमारा मून मूव करे, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है. आप इस पोजीशन से समझ सकते हो. अच्छा ठीक है, इस पोजीशन से समझ सकते हो. ये वाला पोजीशन बिल्कुल न्यू मून वाला स्टेज है जहां पर वो बिल्कुल सेंटर में है. फिर अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, मून भी रिवॉल्व कर रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया. यहाँ पर आने के बाद क्या, उसके थोड़े से पार्ट से, थोड़े से सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज तक आ पा रही है, सो दैट आई एम एबल टू सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मून. So at particular stage, this particular stage is known as crescent moon. Crescent moon is that particular part of the moon at which we are able to see a small part of the moon. ठीक है, हमें जहां पर थोड़ा सा पार्ट मून का दिखाई देता है. ठीक है, तो yes, here we observe that the light is increasing.
लाइट यहाँ पर बढ़ रही है पहले से, तो ये पहले बिल्कुल भी हमें मून दिखाई नहीं दे रहा था. नाउ वी कैन सी a small moon, a small part of the moon. So that particular stage is known as waxing. Waxing means increase in the lighted part of the moon. कि हमें जो पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दिखता जाएगा फुल मून तक. तो ये सारी की सारी स्टेज क्या है? वैक्सिंग, बिकॉज इट शोज दैट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मून, इंक्रीज इन द लाइटेड साइड ऑफ द मून. ठीक है, पहले यहाँ था न्यू मून, देन इट टर्न्स अ लिटिल बिट हेयर, यहाँ पर आया क्रिसेंट मून, फिर वो आया और मूव किया. और मूव करने के बाद नाउ फ्रॉम द हाफ पोर्शन ऑफ द मून I can observe the reflected light. हाफ सरफेस से वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों में आ रही है. सो यस, इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलेंगे हाफ मून, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर स्टेज हाफ ऑफ द मून इज विजिबल टू मी. फिर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ. अभी क्या है कि हमें पता लग रहा है, देखो सन यहाँ पीछे से है और मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आई कैन ऑब्जर्व ऑफ द मून. मून का बहुत सारा पार्ट मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट यहाँ से टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, कहीं बीच में कोई गैप ही नहीं है. सो इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं गिबस मून, व्हेन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मून इज ऑब्जर्वेबल टू आवर आइज. फिर उसके बाद मूवमेंट हुई, ये मेरे बिल्कुल पीछे है सन, बिल्कुल पीछे है. आई एम अर्थ, सन इज बैक टू अर्थ एंड मून इज हियर. तो पूरी की पूरी सन की लाइट यहाँ तक आ रही है एंड आई एम एबल टू सी द कंप्लीट वन फेस ऑफ द मून. मुझे पूरा का पूरा फेस दिख रहा है. इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं फुल मून, बिकॉज आई कैन सी द फुल मून. हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णमासी की रात, पूर्णिमा की रात. ठीक है, तो पूर्णिमा को हमें पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है. अब यहाँ पर पूरा चांद है, सन और अर्थ तो मतलब अर्थ और मून तो रिवॉल्व करते ही जाएंगे. फिर उसके बाद वो रिवॉल्व किया यहाँ पर. अभी क्या है कि उसका थोड़ा सा पार्ट मुझे दिखना कम हो गया क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है. सन की लाइट तो बराबर आ रही है लेकिन उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है. देन आई कैन सी अ स्मॉल पार्ट आई एम अनेबल टू सी ऑफ द मून. मून वही है, मून की शेप्स नहीं चेंज हो रही, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो कम और ज्यादा दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये दैट पर्टिकुलर स्टेज इज अगेन नोन एज गिबस. यहाँ पर भी गिबस मून था, यहाँ पर भी गिबस मून है, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ रहा था साइज. फर्स्ट वी आर अनेबल टू सी एनी मून, देन क्रिसेंट मून, देन हाफ मून, गिबस मून एंड एट लास्ट फुल मून. ठीक है, यहाँ पर पार्ट बढ़ रहा था, देन वी आर सेइंग इट एज अ वैक्सिंग स्टेज. बट यहाँ पर क्या है, पार्ट घटेगा, वी आर कॉलिंग इट एज अ वेनिंग स्टेज. ओके, so yes, gibbous moon when a small part is not observed on the surface of the earth. ठीक है, यहाँ पर आए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए when half of the part sunlight आई, half light मेरी आंखों में आ रही है. ठीक है, तो half of the part can be observed, then that particular stage is known as half moon. Again यहाँ पर crescent moon when a small part is observed, and here again when moon come in between the sun and the earth, then it is not observable at all. At particular stage is known as new moon. So beta, this process is going on again and again, and ultimately we are seeing the different phases of the moon. इसलिए हमें मून के अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि मूवमेंट की वजह से मार्कर चेंज नहीं हुआ है, मार्कर की शेप चेंज नहीं हुई है. तो यू कैन कंपेयर इट विद द मून. मून डज नॉट चेंज इट्स शेप. वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ वी कैन सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. सिर्फ मूवमेंट की वजह से हमें अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं, बिकॉज जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है वो उसका हाफ ही पार्ट पे रिफ्लेक्ट होती है, पूरे पार्ट पे रिफ्लेक्ट होती है. बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइट. So yes, I think so. By watching the video and by understanding the concept, now you are clear with that. ठीक है, यहाँ पर हम इन सारे पार्ट्स को बोल सकते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून, वैक्सिंग हाफ मून, वैक्सिंग गिबस मून. ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेनिंग गिबस मून, वेनिंग हाफ मून एंड वेनिंग क्रिसेंट मून. ये तीनों के तीनों स्टेजेस वेनिंग है और ये तीनों स्टेजेस वैक्सिंग है. द इंक्रीज इन द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज नोन एज वैक्सिंग एंड द डिक्रीज इन द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज नोन एज वेनिंग. सो यस, दिस इज अबाउट द फेजेस ऑफ द मून. Yes students, now our next topic is landing on the moon. कि how many scientists land on the surface of the moon and how many scientists went to the space to experience the non-gravitational atmosphere or non-gravitational
feeling into the space. So yes, landing on the moon. Apollo 11 was a spacecraft which carries 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins. So 3 scientists were there in the spacecraft which landed on the surface of the moon on 20th July 1969. And Neil Armstrong was the first scientist who landed on the surface of the moon. ये पहले साइंटिस्ट है जो पहला कदम रखा गया था मून पे, उन्होंने रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने. सो यस, रीडर्स में कम लाइक फॉर द फन कि पहला पैर अगर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, देन हु वाज द पर्सन हु पुट हिज और हर सेकंड स्टेप ऑन द मून. पहला स्टेप अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था तो दूसरा स्टेप किसने रखा था? ऑब्वियसली वो उतरा होगा, सो सेकंड स्टेप भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही था. So yes, it can come as a riddle sometimes for fun. Okay, so now next is the Neil Armstrong and Edwin Aldrin carries the samples from the moon on the surface of the earth so that they can do the researches on that, and many of the researches have done on these samples, and we got many of the information about the moon by these samples. Okay, so yes, afterwards many of the scientists were there who went to the space. Yuri Gagarin was the first scientist who went into the space. Valentina Tereshkova was the first female scientist who went into the space. Rakesh Sharma was the first Indian scientist who went into the space. And Kalpana Chawla, as you all may heard about Kalpana Chawla. So yes, Kalpana Chawla was the first Indian woman who went into the space. So yes, this is about the landing on the moon. How many scientists went to the space? How many scientists went to the moon? So yes, students, this is about this video. I'm hoping that you are clear with all the points. So this is about this video. Thank you.